स्वप्नेऽम्बिळीनि परलोकहितं ब्रवीम सारम् ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तो सारोऽयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चाने एतत्कथां श्रुतिपुटेन पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसाङ्घ्रिसरोजपूजं नित्यर्प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहेव लोके कैलासशैव भुवने त्रिजगज्जननी गौरी निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवा प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे अभिवृतवल्लकी शतमखोवेरुं तत्पद्मजस्थालो निद्रकरो रमा भगवती ध्येयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदम् पादन्पयुर्देवा समन्तात् स्थिता सेवन्ते तमनुत्रदोषसमये देवं मृडानी पातम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाधव विद्याधरां रवराप्सरसाङ्गणश्च ये अन्ये त्रिलोकनिकलयाः सह भूतवर्गाः प्राप्ते ध्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्था अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्या तस्मिन् महेशे विधिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथा एषते तनय पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तम प्रतिग्रहैर्वयो निन्नेन दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्न पुत्रस्ते द्विजभामिनि तद्दोषपरिहारार्थं शरणायातु शङ्करम् इति श्रीस्कन्दपुराणान्तर्गतदोषस्तोत्राष्टक सम्पूर्णम्।